छोटी कंपनियां होती हैं। सो दीज आर टिपिकली 2, 3, 4, 5, 6, 7,000 वाली 1,000 करोड़ वाली कंपनियां होती हैं जो बहुत ही छोटी हैं एग्जिस्टेंस में, एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दीज कंपनीज आर आल्सो ऑन द हायर साइड। डेफिनेटली अच्छी कंपनियां बड़ी बनेंगी, मिड साइज बनेंगी एंड इवेंचुअली लार्ज कैप बनेंगी, बट यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है बिकॉज कोई कोई कंपनियां बर्स्ट भी हो जाएंगी। जैसे क्लासिक एग्जांपल इज सुजलॉन, एक टाइम पे मिड कैप कंपनी थी, रादर एक लार्ज कैप कंपनी थी, उसके बाद कंपनीज में बहुत सारे इश्यूज हुए। यूनिटेक एक अच्छा एग्जांपल है, पुंजलॉयड एक अच्छा एग्जांपल है, जो जिनका मार्केट कैप नीचे ही चला गया है बिकॉज ऑफ दी market conditions and the other reasons. So you have to be very, very careful as far as you are investing into these small cap companies because risk associated ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा existence नहीं देखा है market में, competition में भी ज़्यादा हो सकता है at a given point in time. So you have to be very selective when you are investing into these small cap companies. And then there is a multi-cap portfolio जहाँ पे you can have a combination of large, mid and small cap companies in whatever proportion you want to have. If you are an aggressive investor, then probably you can have more mid and small cap companies and less into large cap companies. And if you are a conservative or a balanced guy, then probably you can have 50-50 into both, or you can have, if you're a conservative, then you can have 80% into large cap, maybe 10% into 10-15% into mid cap and 5% into small cap. So again, when you are building equity portfolios, sectoral diversification is very, very important. जो मैंने आपको initial slides में भी बताया था. तो sectoral diversification क्यों important है? Let's say for example, आपके पास 1 करोड़ का portfolio है and उसमें सिर्फ 5 stocks है. ओके, उसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक आ गया, इन्फोसिस आ गया, कोई एक छोटी कंपनी समझ लो फाइजर जैसा कंपनी आ गया फ्रॉम द फार्मा पैक, एंड दूसरे 2 कंपनीज है. अगर आपका सेक्टोरल एलोकेशन बहुत ही स्क्यूड है, मतलब सिर्फ 2 से 3 सेक्टर्स आपने इक्विटी पोर्टफोलियो में बनाए, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अंडर परफॉर्म करेगा. इसका रीजन यही है कि जैसे फाइजर लास्ट 2 साल में बहुत कम चला है, एचडीएफसी बैंक लास्ट 2 साल में बहुत कम चला है, तो क्या होगा कि मार्केट 100% चला जाएगा बट आपका पोर्टफोलियो शायद सिर्फ 20% रिटर्न्स देगा. तो आपको लगेगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो है उसने बहुत अंडर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू दी मार्केट. सो दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू हैव at least 15 to 20 good quality names in your portfolio when you are building a portfolio size of 1 CR. Again, if the portfolio size increases, then probably you can increase the number of stocks, but not very much on the higher side because over diversification is also very bad. So you have to have a good diversified portfolio within various sectors. अब जैसे बैंकिंग नहीं चला है लास्ट 6 महीनों में, बट आईटी चल गया है, स्पेशलिटी केमिकल्स चल गया है, तो यू कैन हैव एवरी पोर्शन. रिटेल चल गया है, एनबीएफसीज थोड़े बहुत चले हैं, आपका डिफेंस चला है, पीएसयू सेगमेंट अच्छा खासा चल गया है. सो कहने का मतलब यही है कि अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, एक पर्टिकुलर सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा तो एट द सेम टाइम दूसरा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा. सो यू शुड हैव अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, and as I told you, you should have 15 to 20 names in the portfolio, a well diversified portfolio. So मैंने यहाँ पे 2 सैंपल्स लिए हैं. ये एक पोर्टफोलियो का सैंपल है जो हमने देखा था ड्यूरिंग मार्च ऑफ 2020, जब मार्केट जोर से गिरा था. ऑलमोस्ट 40% निफ्टी हैड गॉन डाउन, ओके, इन दैट पर्टिकुलर फॉल. 2 महीनों में फ्रॉम 12,400 लेवल्स निफ्टी हैड गॉन डाउन टू 7,500 लेवल्स. अब ये वाला जो पोर्टफोलियो है, इसमें हमने देखा था कि ये पोर्टफोलियो हैड गॉन डाउन बाय 57%. okay, when nifty had gone down by 40%, this portfolio had gone down by 57%. and यहाँ पे number of stocks is roughly 40-45. और एक दूसरा सैंपल हम लोग ने देखा था जहाँ पे number of stocks were roughly 30-35, but the portfolio had gone down by only 16%. when nifty had gone down by 40%, this portfolio had gone down only by 16%. अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था. So what are the key takeaways as far as these 2 portfolios are concerned? अब जो first portfolio था जो almost 60% नीचे था, it was a mid cap portfolio. It was only concentrating in the mid cap segment. The number of stocks were 35 to 40, which is on the higher side, and there was no proper sectoral allocation.
ओके, सेक्टर्स में कुछ अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ था, तो रिजल्ट यही था कि पोर्टफोलियो वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 57-60% एंड इट अंडर परफॉर्म द मिड कैप इंडेक्स आल्सो एंड द ब्रॉडर इंडेक्स आल्सो. अब जो सेकंड पोर्टफोलियो था, इट वाज अ मल्टी कैप पोर्टफोलियो. अब यहाँ पे the portfolio was not only concentrating on mid caps, but there was large cap, small cap, as well as mid caps. Number of stocks were 35 to 40, again, which is on the higher side, but because it was a multi cap, the damage on the portfolio was much less as compared to the first portfolio. So better allocation हुआ था इसमें sectoral wise, and individual stocks जो थे इसमें as compared to the first portfolio were much better. So what was the result? Obviously, it was down only 16%, and it completely outperformed the broader index because the sectoral allocation was good, the pedigree of stocks were good, the quality of stocks were good. So the key takeaways are, it is very important how you build a portfolio. आपके पास सिर्फ पैसा होगा, उससे आप ज्यादा पैसा बनाओगे, ऐसी it is not, I mean, ऐसा जरूरी नहीं है. So from that perspective, I mean, so from that perspective, you have to have a good diversified portfolio and a good multi-cap portfolio rather than having a very small or a mid or a large cap portfolio. So then the question arises कि boss मैं ये portfolio बनाऊं कैसे? Okay. So now there are two options. या तो फिर you are expert enough to build your own portfolio because you have the past experience, you have the knowledge of equity markets, you have the knowledge of fundamentals which are used in the equity markets in identifying good quality stocks, in identifying the pedigree of the management, in understanding the ratio analysis, in understanding the fundamental analysis. Yes, अगर ये सब knowledge आपके पास है एंड एक्सपीरियंस भी है तो आप खुद से आप बना सकते हो एंड अच्छा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो. बट आज के तारीख में अगर आप देखा जाए तो 70 to 80% of the population who are investing into equity markets, they really don't have the knowledge in terms of how to build a portfolio. So then in that case आप क्या करोगे? आप कहाँ जाओगे? आपके पास पैसा है बट कहाँ पर निवेश करूँ, कौन से स्टॉक्स खरीदूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है. So at that point in time, you have to approach a fund manager like Motilal Oswal, जहाँ पे एक solid research team है, जहाँ पे हम काम करते हैं, and we directly talk to the management of all these companies. We come across so many people who are directly associated with the companies, and we get to understand the fundamentals of the company. तो हमें ये बहुत आसान हो जाता है कि हम कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें, हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, rather than using your brains and going wrong in your investments. It is always better to approach the fund manager or a particular broker, जहाँ पे एडवाइजर्स होते हैं, जिन्हें एक अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है कि कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, and they will take care of your hard-earned money. So that is a humble request to all of you who are listening to this particular webinar. Please, if you have good amount of money, but if you don't have the knowledge as far as equity markets is concerned, approach a good investment advisor so that he can take care of your money over a period of time in a much better way. So एक मॉडल पोर्टफोलियो का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर. इफ यू वांट टू बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो जैसे मल्टी कैप पोर्टफोलियो हम बोलते हैं, जहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों मुझे इन्वॉल्व करना है, तो हाउ कैन वी बिल्ड दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि 16 स्टॉक्स हैं across various sectors like banking, cement, consumer durable, FMCG, IT, metals, NBFCs, oil and gas, pharma, telecom. और इसके अलावा एक सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन के अलावा मुझे एक मल्टी कैप डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए. तो मुझे लार्ज कैप स्टॉक्स भी चाहिए, मिड कैप स्टॉक्स भी चाहिए एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स भी चाहिए. तो अगर आप देखोगे 3 टेबल्स हैं, एक जहाँ पे मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, सेक्टर्स डाला है, परसेंटेज एलोकेशन डाला है, एंड टिपिकली ये मैंने एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाया है जहाँ पे 80% ऑफ द एलोकेशन इज इनटू लार्ज कैप, 15% इज इनटू मिड कैप एंड 5% इज इनटू स्मॉल कैप. एंड टू एड टू इट, एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हो तो आपका FMCG में आप 15 to 20% रख सकते हो,
आईटी में 15% रख सकते हो, फार्मा में 10 to 12 to 15% रख सकते हो, सो दैट ये जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें एलोकेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो होगा वो थोड़ा सेफ होगा व्हेन एवर देयर आर डाउनसाइड्स इन द मार्केट। तो ये कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की तरीके से एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हाई बीटा सेक्टर्स होते हैं जैसे मेटल्स हो गए, या फिर सीमेंट हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, बैंकिंग एंड एनबीएफसी हो गया, तो उसमें एलोकेशन हम थोड़ा कम करते हैं, सो दैट कीपिंग इन माइंड कि मेरा जो इन्वेस्टर है वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो उस हिसाब से हम सेक्टोरल एलोकेशन करते हैं। अब मान लो कि कोई इन्वेस्टर बोलता है कि मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है वो अग्रेसिव है, तो मुझे 80 आई एम ओके विथ हैविंग लार्जर पोर्शन इनटू मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स विच आर एसोसिएटेड विथ हायर रिस्क। तो हम क्या करेंगे कि लेट्स से 60-70% हम मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, एंड 30-40% वी विल इन्वेस्ट इनटू लार्ज कैप स्पेस। सो ऑब्वियसली हम एफएमसीजी, आईटी, फार्मा में एलोकेशन कम कर देंगे, एंड एट द सेम टाइम जो हाई बीटा सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है एंड मूवमेंट ज्यादा होती है, जैसे बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, हम वो सारे सेक्टर्स में ज्यादा निवेश करेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन the investor risk profile, and then the fund manager will take a conscious approach कि बस ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए मुझे ऐसा वाला पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, और जो कंजर्वेटिव है उसके लिए अलग टाइप का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस when the client's money come into a fund manager's kitty. He will take proper care of all these things and then eventually build a portfolio. सो एट द एंड ऑफ इट आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपने आपका पैसा डाल दिया 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, बट रेगुलर मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर 1 महीने में या तो फिर हर एक क्वार्टर में आपको एक बार आपका जो हम कहते हैं चिट्ठा खोल के देख लेना चाहिए। आज मैंने 3 महीने पहले मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, तो आज के तारीख में 1 करोड़ की वैल्यू कितनी है? कहीं वो 95 लाख तो नहीं हो गई, कहीं कहीं वो 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख हो गई है, या 1 करोड़ 20 लाख हो गई है। इट्स ओनली बिकॉज इट विल गिव यू a good sleep at night, and it will keep your eyes open that जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो सही जगह पे इन्वेस्ट किया है या नहीं। अगर सही जगह पे नहीं किया है, एक करोड़ की वैल्यू आज 90 लाख हो गई है। सो देन व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन माय पोर्टफोलियो? क्या गलत जा रहा है? तो यू कैन टेक द करेक्टिव एक्शन एट दैट पॉइंट इन टाइम। 3 महीनों के बाद भी अगर आपका पैसा डूब रहा है, मतलब नोशनल लॉस हो रहा है, तो प्रॉबेबली यू नो बिकॉज ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी, जाहिर सी बात है कि कभी कभी पोर्टफोलियोज नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर हर बार कुछ ना कुछ चेंज करना है, बट एटलीस्ट आप एक बार देख लोगे कि जो मैंने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो सही है या नहीं है। कई क्वार्टरली नंबर्स खराब आए हैं, तो मैं कुछ करेक्टिव एक्शन लेना मुझे चाहिए। अगर एक क्वार्टर का नंबर्स खराब है, बट मुझे पता है कि इसकी स्टोरी बहुत इंटैक्ट है फॉर नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, और मे बी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, और मे बी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, देन आई विल स्टे काम, पेशेंस रखूंगा और मैं उसमें इन्वेस्टेड रहूंगा। बट कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू periodically go through your portfolios and just see whether there are any laggards in the portfolio, whether there are any minus points in the portfolio, then you can take the corrective action. That is the main thing which I am trying to tell you. So eventually, at the end of my presentation, I would say that equity investment जो है, it is a combination of art as well as science.
ये कोई rocket science नहीं है. It is not only art, it is not only science, but it is pure combination of art and science. So this is where my presentation comes to an end. Guys, we at Motilal Oswal have a very solid research team, and we have a solid training team as well. So if you can look at this particular slide, we have EduMo Pro, which is the training team which we have at Motilal Oswal. We invest a lot of money as far as research and training is concerned. We want our investors to be absolutely um, uh, full of knowledge in terms of where they are investing their money, in terms of what they are investing into. So we offer a lot of courses as well as far as the stock markets are concerned, right from trading to investments. There are advanced courses on stock markets. There are advanced courses as far as the options and derivative strategies are concerned. So we have in-house trainers for all these things. We have advanced courses on technical analysis also, which are taken by trainers like Manish Shah. Option strategies are taken by Smita Parekh. So a lot of things are offered at Motilal Oswal platform. We are available on social media also. A lot of our research is available. In case you want to get into touch with us, if you have any doubts regarding these courses, regarding our research, please feel free. You can give a missed call on this particular number which is there in front of you, and our experts from the company would get in touch with you, and we will help you out in every possible way. So more or less, that's all from my side. I have tried to cover as many things as possible as far as building a good portfolio is concerned, as far as the asset allocation is concerned, as far as the risk appetite of a particular investor is concerned, as far as the diversification is concerned, as far as large, mid, small cap, multi-cap portfolios are concerned. Most of the things I've tried to cover in my presentation. And as I told you, I have taken roughly 35-40 minutes for this presentation. I'm with this, I am closing my remarks, and I'll be happy to answer whatever questions you have. Uh, I will be definitely happy to answer them. So there are a couple of questions already which I can see here. There are people who have really appreciated about this presentation. They are saying very nice presentation. Thank you so much. It was a very knowledgeable presentation. Thank you. Thank you. Really appreciate your time, people. There are a couple of questions that what are the cost of these courses. So we will definitely get in touch with you. Probably, you can give a missed call on this particular number, and the concerned team will definitely get in touch with you in terms of which course you are looking out for, in terms of what exactly you want as far as training is concerned, and what are the courses, what is the time frame for that, for those courses, and we will answer to all those questions. Okay. I will be taking the questions now. So guys, there are a couple of questions which are pertaining to individual stocks. So I'm afraid this particular presentation, rather this particular session is not for getting into the individual stocks. So I would, keep away all those questions. But before getting into that, I'll just give you the gist of the overall market right now. Obviously, we are all aware that the markets have corrected almost 13 to 14% from their all-time highs of 18,600 on Nifty. So for all those investors who typically look for the investments into equity from a longer-term perspective, it is a very good opportunity to get into these stocks, because though Nifty and Sensex have corrected by 13-14%, there are so many good quality large cap names, blue chips, which have corrected by 25 to 40% in this particular fall in last 2 to 3 months. So obviously, couple of months back, the valuations were on the higher side. बहुत सारे stocks अपने fundamentals के बहुत आगे trade कर रहे थे. So the market have seen this particular correction in these stocks, and the stocks are now available at reasonable levels. So definitely one can take this opportunity and build good portfolios over a longer term period.
Also, I would like to say that the corporate earnings जो हम देख रहे हैं लास्ट 2 से 3 क्वार्टर में, they have really revived. लास्ट डेकेड में हम लोग ने देखा था, लास्ट 5 से 6 साल में there was no corporate earnings coming in. So as far as the companies were concerned, even the large cap companies, keeping aside 15 to 20 companies, most of the companies were struggling. But since last 2 to 3 quarters, we have seen some kind of revival happening. We are seeing some kind of EPS growth coming in for good quality companies. So we feel that this particular trend will continue for next 2 to 5 years. सो अगर ये कॉर्पोरेट अर्निंग रिवाइवल अच्छा खासा जो शुरू हुआ है, ये नेक्स्ट 2 से 5 साल के लिए लगातार कंटिन्यू होता है, तो हम 2003 से लेके जो 2008 का बुल रन था, जहां पे मार्केट्स हैड गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 450 to 500% ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स, again that kind of a period can come in. So nifty can double from here in next 3 to 5 years time frame, अगर corporate earnings consistently आती है तो. So we would request all the listeners at this point in time to invest in good quality blue chips. There are so many stocks which are doing phenomenally well. So many companies from the mid and small cap segments also which are doing very well. जहाँ पे growth prospect बहुत अच्छा है, management pedigree अच्छा है. There are few themes which are very very lively at this point in time. जैसे electric vehicles का एक theme हो गया, renewables का एक theme हो गया, API मैन्युफैक्चरिंग का एक थीम हो गया, स्पेशलिटी केमिकल्स का एक थीम हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पर से इट इज अ वेरी गुड थीम जो बहुत अच्छा करेगी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years. So all in all, you have to select good quality companies from each and every sector and build a good diversified portfolio, which I have already spoken during the course of my presentation. So एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर व्यू ऑन SIP एंड यूलिप्स. सो डेफिनेटली मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि SIP करना बहुत जरूरी है, सो दैट you can enter into the markets at each and every level. अब जैसे आपने 2 महीने पहले अगर 18,000 18,500 के इंडेक्स लेवल पे इन्वेस्ट किया है और आप डर के बैठ जाओगे और आज 16,000 के लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, then you will have to wait for a longer period of time for your investments to give fruitful returns. At the same time, if you are doing an SIP and if you are taking the advantage of this volatility, आपने 18,500 पे भी इन्वेस्ट किया, आप 17.5 पे भी इन्वेस्ट करोगे, आप 16.5 पे भी करोगे, तो आपका एवरेज बहुत अच्छा खासा नीचे आ जाएगा. एंड देन जो आपका टारगेट जो है इन्वेस्टमेंट्स का, जो रिटर्न्स का जो टारगेट है, वो जल्दी अचीव कर पाओगे. So obviously SIP is the best tool to invest into the market at each and every level and over a period of time. So definitely you can go ahead with that. What is your opinion on small cases? Yes, that is a very interesting question. Again, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है निवेश करने के लिए, but at the same time they have some funds and they really want to invest into the equity markets, then they can get into the small cases. Small cases are nothing but क्या होता है कि एक बास्केट टिपिकली जनरेट करते हैं फंड मैनेजर्स. जैसे मोतीलाल ओसवाल में भी हम बास्केट आइडियाज काफी सारे जनरेट करते हैं. So depending upon the flavor of the market, depending upon the flavor of which sector is going to perform for next 6 months or maybe for next 1 year, we come out with these basket ideas. Okay, जहाँ पे एक बास्केट में करीबन 4 से लेके 8 से लेके 12 स्टॉक्स होते हैं. So let's say for example if you want to invest 20,000 rupees, आप वो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है जो ऑलरेडी फंड मैनेजर डिसाइड कर लेता है. हर एक स्टॉक के लिए एक परसेंटेज एलोकेशन डिसाइड हुआ होता है. सो यू इन्वेस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर proportion into these either 4, 8 or 12 names, whatever amount of stocks are there in that particular basket, and then you just hold on to that basket for your target returns. So either that basket is made for 3 months time frame or maybe for 6 months time frame or maybe for 1 year time frame. So last 1-1.5 साल में मोतीलाल ओसवाल में हमने करीबन 40 से 50 ऐसे अलग अलग टाइप की बास्केट्स जनरेट की थी. So there are a couple of baskets which have given returns of 100% in
less than 8 to 9 months also. Something like IT basket, then we had come out with sustainable energy basket, जहाँ पे renewables and electric vehicles की theme हमने combine करके एक basket generate की थी. That basket had gone up by 80%. We had come out with a Tata consumption basket which had given 80 to 100% in 1 year's time frame. So इन्वेस्टर्स टिपिकली जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मैं ये वाला स्टॉक खरीदूं या ये वाला स्टॉक खरीदूं, बहुत सारे मार्केट में टिप्स देने वाले लोग होते हैं कि भाई ये तू ये खरीद ले, ये तो बढ़ जाएगा. बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता है. You cannot try your luck every time. So that is the reason we are talking about approaching a particular broker or a fund manager like us, so that we can give you proper guidance in terms of आपको क्या बाय करना है. अगर आपके पास छोटे फंड हैं तो आप उस रेशियो में बाय करिए, अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा कॉर्पस है तो आप उस रेशियो में बाय करिए. सो दैट इज वेयर द एक्सपर्टीज विल कम इनटू प्ले. सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ विल यू जनरेट रेगुलर इनकम हियर. सो रेगुलर इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हो. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एक इक्विटी पोर्टफोलियो है, आपने टिपिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, बट एट द सेम टाइम जैसे आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप आपके पोर्टफोलियो को थोड़े को आप शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए भी स्प्लिट कर सकते हो. जैसे आप, आई एम जस्ट शोइंग अ नंबर, आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो उसमें से आप करीबन 7 लाख लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, बट जो 3 लाख है वो आप उसको शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए. सो दैट क्या होगा कि आप लेट्स से आपने कुछ खरीदा, 3 लाख में से आपने 4-5 स्टॉक्स खरीदे फ्रॉम अ शॉर्टर टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव. तो आजकल मार्केट्स इतने फ्लैम्बॉयंट हैं, इतना यूफोरिया है कि कोई कोई स्टॉक्स में आपको 3 या 4 दिन में ही 10% रिटर्न मिल जाता है, कोई कोई स्टॉक्स में आपको 2 या 3 महीने में 15 से 20-25% का रिटर्न मिल जाता है. तो क्या होगा कि लॉन्ग टर्म आपका एक पोर्टफोलियो साइड बाय साइड ग्रो हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम जो आपको रेगुलर इंटरवल में आपको पैसे की जरूरत है, तो आप वो 3 लाख में से आप जो प्रॉफिट बनता है वो आप बाहर निकाल सकते हो. सो दैट इज हाउ यू कैन जनरेट रेगुलर इनकम. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो पूछ रहे हैं, can you explain ETF and can you compare with mutual funds as the returns? So see basically क्या होता है कि ETF जो है, that is exchange traded funds, ये एक नया concept है इंडिया में. दो when I say नया, it is already there for last 10 to 12 years, but यहाँ पे awareness नहीं है लोगों में. ETF क्या है, why do you want to invest into ETF, and what are the different types of ETFs. At the same time mutual fund industry जो है इंडिया में, it is reasonably known now to the people, बट अगेन इट डिपेंड्स आपका टाइम होराइजन क्या है, आपको आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए. आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो. मोटा मोटी आपका रिटर्न्स सिमिलर होगा अगर वो पर्टिकुलर ईटीएफ एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर थीम को रेप्लिकेट कर रहा है. जैसे निफ्टी है, 50 स्टॉक्स का जो कंपोजिट इंडेक्स है, सिमिलरली एक निफ्टी ईटीएफ होता है दैट इज कॉल्ड एज निफ्टी बीस, जो एग्जैक्टली निफ्टी का रेप्लिका है. तो अगर आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे जो सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और अगर आप निफ्टी ईटीएफ खरीद के बैठ जाते हो, तो उस दोनों का रिटर्न्स मोटा मोटी सेम ही होगा. सो अगेन इट डिपेंड्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए करना है. जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो, कहीं कभी कभी उसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का या मे बी 1 साल का, 2 साल का. बट अगर आप ईटीएफ खरीदते हो तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो इट इज अवेलेबल ऑन, इट इज देयर इन योर डीमैट अकाउंट. आपने आज खरीदा, 3 महीनों में आपको अगर 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप उसको बेशक बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हो. So there are advantages of both the things. So you can take that decision again, consulting your advisors. एक क्वेश्चन है कि कितने पैसों से हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं. What should be the starting amount? So again it depends upon the individual. It depends upon आपका गोल क्या है, आपके पास कितना फंड्स अवेलेबल है,
सो अगेन वेरी वन इम्पॉर्टेंट रूल, थंब रूल इन इन्वेस्टमेंट इज, आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं महीने के या फिर सालाना, सबसे पहले आपको एक प्लान बना देना चाहिए कि इतना पैसा मेरे को साइड पे रखना है, बिकॉज ये मेरे मेडिसिन में जाएंगे, ये मेरे बच्चे के एजुकेशन में जाएंगे, ये मेरे घर के खर्च में जाएंगे, और वट एवर इट इज। उसके बाद आपके पास जो भी पैसा बचता है वो आप इक्विटी में डाल सकते हो, जो आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए जरूरत नहीं है। टिपिकली वो पैसा आप इक्विटी में डालोगे तो क्या होगा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स को कुछ हिंड्रेंस नहीं आएगा, मतलब दे विल नॉट बी अफेक्टेड। ऑब्वियसली इमरजेंसी हो गई एंड आपको अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करना पड़े, ऑब्वियसली नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। बट पहले आप अपने एक्सपेंसेस का प्लान आउट कर लीजिए एंड देन जो भी आपके पास पैसा बचता है वो आप इक्विटी में डालिए, सो दैट इट इज टेकन केयर ऑफ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइडियल एसेट एलोकेशन। सो अगेन जैसे मैंने बताया कि इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपिटाइट। आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट विल वेरी फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर। एक क्वेश्चन है कि पीएमएस और एआईएफ के क्या टिकट साइज होते हैं एंड चार्जेस कितने होते हैं। सो अगेन पीएमएस का जो सेबी मैंडेट है उस हिसाब से 50 lakhs का मिनिमम टिकट साइज है, एंड एआईएफ का, दैट इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का टिकट साइज है 1 CR एज पर द सेबी मैंडेट। बट एनुअल चार्जेस जो होते हैं वो डिफर करते हैं फ्रॉम वन ब्रोकर टू अनदर। मोतीलाल ओसवाल कुछ चार्ज करेगा, आनंद राठी कुछ चार्ज करेगा, इडलवाइज कुछ चार्ज करेगा। सो इट वेरीज फ्रॉम वन ब्रोकर टू अनदर, and it also varies from the size of the portfolio. बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स के क्वेश्चन हैं यहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली ये राइट सेशन नहीं है टू आंसर देम, सो आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू आंसर दैट। काफी जन ने अप्रिशिएट किया है, वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज session for investment. It has opened our eyes. Thank you so much, guys, for the positive feedback. किसी का क्वेश्चन है एडवांस कोर्स ऑन ऑप्शन स्ट्रेटजीज फीस। तो ऑनेस्टली गाइज, आई एम फ्रॉम द रिसर्च साइड। ट्रेनिंग का जो हमारा टीम है, दे वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर दैट। So I would request you to give a missed call on this particular number, which is there in front of you, and they will get in touch with you definitely. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग? Should we keep two separate demat accounts? What percentage of portfolio should be trading and long term investment? So again, that is a very good idea. You can probably have two different demat accounts. एक आप proper long term के लिए रख सकते हो और एक proper trading के लिए रख सकते हो, so that your investments don't go haywire and you are absolutely clear on your goals. जो short term के लिए आप कर रहे हो वो एक particular demat में आप उसको टैकल कर रहे हो, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें आप शॉर्ट टर्म का कुछ भी मिक्स नहीं कर रहे हो। What percentage of portfolio should be in trading and long term investment? Again, this is a very interesting question, but again that will vary from individual to individual. अब it depends, आपको आपका जो गोल है, आपने जो गोल सेटिंग किया है, वो आपका जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा है या शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा है, आप रिस्की बेट्स लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यू कैन डिसाइड हाउ मच पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो यू वांट टू keep in trading, how much risk you want to have associated with your trading portfolio, and from a long term portfolio आपको कितना करना है। So एक concrete answer इसका कभी भी नहीं होगा, it will vary from individual to individual. किसी ने पूछा है कि which are the blue chips which one can buy? So obviously blue chips बहुत सारे अच्छे अच्छे stocks correct हुए हैं, though this is not the right session, but I would give few names. बहुत सारे stocks like Infosys, PCS, HDFC Bank, ICICI Bank, SBI, Axis Bank,
Sun Pharma, Divi's Labs. These are all the blue chip names which have corrected significantly in this market. One can definitely accumulate them in 2 to 3 tranches. किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि समटाइम्स द एंट्री टाइम इज रॉन्ग, वी परचेज स्टॉक एट हायर प्राइस एंड देन फर्दर इट इज devalued and go sideways in the portfolio. Such stocks are good fundamentally, but they pull down the portfolio. What should be done in that case? So definitely it is a very interesting question. So यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ऊपर के भाव में आप चढ़ जाते हो एंड करीबन कभी कभी 2 महीने, 6 महीने, 1 साल लग जाता है वो भाव आने के लिए. तो यहाँ पे आपको एक कॉन्क्रीट व्यू लेना पड़ेगा. सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ग्रोथ इश्यू है, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे. आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो ग्लोबल सिनेरियो है या फिर जो डोमेस्टिक सिनेरियो है वो पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट है. तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में 1, 2, 3 क्वार्टर के लिए कंपनी अंडर परफॉर्म करेगा. बट अगर आपको अगर आप श्योर हो कि फ्रॉम अ 5 year perspective this company can be a multi bagger, so then in that case you don't have to keep changing your portfolio stocks, and only from a shorter term perspective आपके mindset को आप इतना भी शॉर्ट मत कर लीजिए कि लॉन्ग टर्म में अगर आप वही पर्टिकुलर स्टॉक से बेनिफिट आपको होने वाला है एंड अगर आप उसमें से निकल गए, so obviously that is not a good investment sign. So definitely you'll have to keep some patience, but obviously you have to keep all these things in mind, whether are there any management changes happening, अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो गया है या फिर कोई मैनेजमेंट में से निकल करके जा रहा है कंपनी को छोड़ के, या फिर उसके नंबर्स बहुत ही खराब हैं, तो फिर यस यू कैन टेक अ कॉन्क्रीट कॉल. भले भी फिर वो 15 से 20% आपके बाइंग से नीचे है तो भी आप उसको एग्जिट करके निकल जाओ. There is one interesting question: when and how to average a portfolio in the current market situation. So, friends, अभी अगर आप देखोगे कि मार्केट ऑलमोस्ट 13 to 14% ऊपर से करेक्ट हो चुका है एंड देयर आर मेनी इंडिविजुअल स्टॉक्स व्हिच आर करेक्टेड बाय 20 to 50%. जैसे जो नए आईपीओज आए हैं या फिर जो डिजिटल थीम, ई कॉमर्स थीम के जो स्टॉक्स है, दे हैव करेक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ऑल्सो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड में रखना कि आप कौन से स्टॉक को एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज अभी देर आर फ्यू स्टॉक्स विच आर करेक्टेड बाय 50-60%, एंड यू नेवर नो. अगर कोई ई कॉमर्स स्टॉक है जहाँ पे बैलेंस शीट नहीं है, जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कर रही है, एंड अगर आप उसको लेते जाओगे, एवरेज करते जाओगे, बट वो कंटिन्यूस नीचे स्लाइड होते जाएगा और उसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा, देन ऑब्वियसली यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस इवन इफ यू आर एवरेजिंग इट आउट. तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपनी कर क्या रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, एंड whether it will make sense to average out that particular company. So from a investment point of view, you have to take very concrete calls in terms of कौन से स्टॉक्स में मैं एवरेज करूँ. तो उस वजह से आपको क्वार्टरली नंबर्स देखने पड़ेंगे, मंथली सेल्स नंबर्स देखने पड़ेंगे. अगर सेल्स नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स अच्छे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनेरियो, जैसे ये रशिया यूक्रेन वॉर हो गया एंड स्टॉक हैज कम डाउन बाय लेट्स से 15%, बट अगर तो एक पर्टिकुलर क्वार्टर के नंबर उसके फैंटास्टिक है, प्रीवियस क्वार्टर्स के नंबर फैंटास्टिक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको ये पर्टिकुलर जो फॉल आया है स्टॉक में यूटिलाइज करना है एंड यू हैव टू अग्रेसिवली बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी. करिए आप एवरेज. तो क्या है कि जब भी ये मार्केट जोर से ऊपर आएगा तो आपका ये पर्टिकुलर स्टॉक का भाव बहुत जल्दी से ऊपर आएगा, बिकॉज उसमें इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस विल बी द फर्स्ट वन टू एंटर in all these stocks rather than investing into those stocks which are not making profits, those companies which are not making profits but which are going down and down. So I think बहुत सारे questions are getting repeated. एक question है कि we have to concentrate on technicals and fundamentals for investment. So yes, definitely we call it as techno funda. So
fundamentally, if you have selected good set of stocks, and if you are capable enough of putting the technical strength to that learning, then obviously you can make good money, because fundamentally अगर stocks अच्छे हैं, but technically अगर आप खराब लेवल पे एंटर कर लेते हो, हायर लेवल पे एंटर कर लेते हो, तो अगर आपको टेक्निकल फंडा का नॉलेज है, technical analysis का knowledge है, and if you can avoid entering into higher levels, then it will definitely help you to fetch faster returns over a period of time. बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस सेशन के पर्टेनिंग नहीं है, so I am definitely avoiding those questions. They are more related to individual stocks, so I'm sorry, this is not the correct platform to answer those questions at this point in time. Apart from that, I think I have answered most of the questions which are getting repeated. ETF point of view, PMS, mutual funds, asset allocation, major sectors. What are the major sectors which should be looked into for long-term investment? So as we had seen in the slide also, there are major sectors like FMCG, consumer durable, your IT, retail, banking, NBFCs, insurance, defense, PSUs segment is one of the segment which is there. Sugar hai, real estate hai, construction hai, infra hai, capital goods hai. So all these sectors are there, from which you can select the top leaders, top companies from each and every sector, and build a good investment portfolio. Then there is one question: what is the good time to buy ETF? So see, ETF is nothing but an exchange traded fund. It is the replica of various indices. जैसे बैंकिंग का ETF होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ETF होता है, निफ्टी का ETF होता है. तो whenever the markets are down 10, 15, 20%, all these ETFs also come down exactly in line with the markets. So that is a good time to enter into these ETFs. किसी ने क्वेश्चन पूछा कि whether these baskets are free to investors. Yes, absolutely. I mean, you just need a demat account, and these baskets, we don't charge any additional fees in terms of revenue. Only your brokerage, whatever you are paying, that is charged to you. It is just that it is a combination of 5 to 10 different types of stocks which the fund manager or which the research people at Motilal Oswal feel that they will do good. So we combine those stocks in the form of a basket, and you can buy in your portfolio, and only brokerage is charged. There are no additional fees associated like PMS or AIF. So I can see most of the